नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का दोस्तों गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हो आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो विद अ ब्रांड न्यू वीडियो विद द ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जाम डे. Yes, it's unveiled actually. Let's go through them. And there is one confusion, one doubt I have, and one request also. So stay tuned with me for the upcoming 5 minutes and hit the subscribe button and like button for more such authentic and helpful videos. Let's begin. Firstly, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो विद द कलर प्रिंट आउट ऑफ दैट एडमिट कार्ड एंड अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली कीप अ फोटो आईडी कार्ड लाइक योर आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट. इसमें से कोई भी एक जरूर रखना ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. इट विल बी वेरीफाइड ट्वाइस और थ्राइस. Second is definitely you have to reach there. It's told that you have to reach there 90 minutes prior to the examination. Yes, definitely. But after the initiation of the examination, you won't be able to log in if 30 minutes is over. So remember this particular thing, guys. Very, very important. So it's better right now, almost 1 month left. You already got your admit card. So it's better actually to go to that place once and at least know by person actually that what are the modes of transportation available. If it's very near to your house, great. Third is very important that candidates will be allowed to read the instructions and all, that is 20 minutes before the start of the examination. And also once the examinations are going to start, you can go through the entire question paper once. That's very important because I've told you the 3-pass method earlier many times. I will tell you once again. In that first pass, actually, you select the questions that are very, very solvable, right, for you people. Just at one glance, you can identify those questions. You will write those number of the questions in your scribble pad. By the way, स्क्रिबल पैड के बारे में डिटेल वीडियो बनाया, 10 टिप्स है उसमें हाउ टू यूज स्क्रिबल पैड. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, देख लेना. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ओनली अ वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अलाउड. दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन एंड नो फिजिकल कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, रिस्ट वॉच. इवन रिस्ट वॉच इज नॉट अलाउड. कोई एनालॉग वॉच भी नहीं, राइट. कोई भी वॉच पहन के मत जाना, राइट. बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस बिकॉज वॉच की तो कोई जरूरत ही नहीं है. वेन एवर यू आर गोइंग टू लॉग इन, राइट, वहां पे काउंट डाउन टाइमर चलता रहेगा. आप जैसे स्टार्ट करोगे वहां पे 3 आवर, 2 आवर 59 मिनट्स, 2 आवर 58 मिनट्स ऐसा होता रहेगा. सो व्हाट इज द नीड ऑफ द वॉच? कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन pen and pencil, and if you are bringing a water bottle, definitely it's wise actually to keep a water bottle with you, but it should be a transparent one. बस घुसने से पहले जो है वो 10 रुपये 20 रुपये वाला जो मिनरल वाटर का बॉटल है वही खरीद लेना, बेस्ट है वो. ठीक है, घर से जो है अपने डिजाइन वाला वाटर बॉटल मत लेके जाना, रिजेक्ट कर देता. One more important thing is that candidates are not actually allowed to leave the examination before the end of the session. आपको 3 घंटा वहां पे बैठना है. Now coming to the confusion part and coming to the also the request part. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है that examination center personnel are not responsible for the safety of the candidate's personal belongings. यहाँ पे मेरा डाउट और confusion ये है that obviously suppose a student is traveling, not everybody is going to travel with someone, right? फिर पेरेंट्स या फिर दोस्त या भाई सबके साथ तो नहीं जा सकते, हो सकता है अकेला जा रहे हैं. Obviously he or she needs a mobile phone, right? उनको मोबाइल फोन चाहिए. अब यहाँ पे लिखा हुआ है that examination center personnel are not responsible for the safety of the candidate's personal belongings. I think they should be responsible, right? एक पर्सनल बिलोंगिंग तो सब तो एकदम जो है घर के बगल में सबका सेंटर नहीं है कि आप बिना फोन के चले गए वहां तक, राइट, या फिर बिना कुछ लेके जो है सामान लेके चले गए वहां पे. सो आई थिंक दे शुड टेक केयर अबाउट दिस. I am little bit doubtful or confused about this statement which they have given. Definitely अगर आप examination hall में लेके वो घुस रहे हो, even after knowing all this stuff, then obviously it should be prohibited. And the request is that please do check. This is my request to the gate authority. Please share this video actually so that it reaches them. That actually many a times I have found even in the last years, okay, that in some places what is happening that the computers are not working properly. कहीं पे कीबोर्ड काम, कहीं पे माउस काम नहीं कर रहा है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Please check these systems at least before the gate. It's a matter of 1 year, 2 year, 3 years effort by the students, guys. So please don't let them go in vain. It's my earnest request to the gate authority, क्योंकि होता है कि ऐसे ही students बहुत ज़्यादा pressurized रहते हैं. तो प्लीज
ताकि और उनको ज़्यादा ये सब मतलब करके उनको परेशान ना किए. That's my humble request actually. So please ensure a proper computing system in the examination centers. That's all. Thank you for being here for so long. Stay safe, take care, and definitely hit the subscribe button. Follow me on Instagram. Join my courses, guys, to get the most expected MCQ, MSQ, and NT questions. And currently, the Get 24 offer is going on. So download my app right now and join my courses right now, and you will get 24% instant discount. Join right now to elevate your GATE score, to elevate your level.